नमस्कार आपण मानक समस्त को यही वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आपण सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स DSE 1 रो किछि 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर आपण शेयर करी जहाँकि यूनिट 4 इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ रो आम किसी 2 मार्क्स क्वेश्चन देखा। आ पूर्व यूनिट 1 2 3 ऑलरेडी वीडियो बन सारी जो मैंने देखी ना चैनल को जाए देखिपारे। तो आज स्टार्ट करवा। तो फास्ट टाइम देखिए व्हाट इज रेफ्यूजी। रेफ्यूजी माने कौन ना ये रेफ्यूजी एन इंडिविजुअल मैं रेफ्यूजी गोटे इंडिविजुअल व्यक्ति हु इज आउटसाइड हिज और हर कंट्री माने ऑफ नेशनलिटी और हैबिचुअल रेजिडेंस। तो गोटे लोक व्यक्ति जी कि ता निज देश निज कंट्री से कौन पुरुष हूँ कि स्त्री हूँ आ निजर जो नागरिकता को हरई मैंने बाहर आसती। ए रेफ्यूजी इज अनविलिंग टू रिटर्न ड्यू द ए वेल फाउंडेड फियर ऑफ प्रोसेसन बेस्ड ऑन हिज ऑन रेस रिलीजन नेशनलिटी पॉलिटिकल ओपिनियन ऑन हिज ए मेंबरशिप इन ए पार्टिकुलर सोशल ग्रुप। आ रेफ्यूजी कहले बुझा आपण मैंने केते माने यूट्यूब देखिथे जो नॉर्थ कोरिया केते लोक रेफ्यूजी पल आसता चली आसती से मैंने जो सुरक्षा न थाए निजर सेल्फ सुरक्षा प्रोटेक्शन से मैंने कौन ना शरणागत नियंती। तो आप यूट्यूब सर्च कले देखिपारे। तो ठीक से ही केस कौन हम ना गोटे व्यक्ति थी जी कि किसी भयर निजर जी देखला निज देश में मत सुरक्षा ना मोर जीवन केतबे जापे तो सी कौन करे ना अन्य देश को चली जाए ताकू शरणार्थी कहुए रेफ्यूजी कहुए। राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ। तो इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ कौन द मॉडर्न इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ कैन बी ट्रेस्ड इन द लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स टेकन बाय लीग ऑफ नेशंस। जो आम देखुं कौन ना इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉटा ओरिजिन किपर है। तो द मॉडर्न इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ कैन बी ट्रेस्ड केबे ना लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव टेकन बाय लीग ऑफ नेशंस। नेशन मैंने आसिले राष्ट्र मैंने ताके आसिक लीग करी से सब जो इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ को ओरिजिन करले। इट अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी 1921। तो 1921 इट अपॉइंटेड है। व्हेन डिड इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। तो यह केबे आसिला अस्तित्व रे ना द इंटरनेशनल रेफ्यूजी IRO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी गोटे एजेंसी। इट वाज फाउंडेड ऑन 20 एप्रिल 1946 ऑर्डर टू डील। तो यह केबे ना 1946 20 एप्रिल रे इन ऑर्डर टू डील विथ द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजी माने जो रेफ्यूजी मान कौन कौन असुविधा होती है डील करवा समाधान करवा सॉल्व करवा। इन 1951 1951 द इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन वाज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू एजेंसी known as इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफ टू रेफ्यूजी। तो फास्ट थिला कौन ना इंटरनेशनल रेफ्यूजी ऑर्गेनाइजेशन पर कौन है ताकू इंटरनेशनल प्रोटेक्शन टू रेफ्यूजी को रिप्लेस करागला। ओके व्हाट इज UNHCR। तो UNHCR कौन द स्टैट्यू ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी बा UNHCR वाज एडॉप्टेड ऑन 14 डिसेंबर 1950। 14 डिसेंबर 1950 ताकू एडप्ट करगला। एंड द ऑफिस केम इनटू बिगेन द 1 जनवरी 1951। इट्स मैंडेट वाज जनरल एंड यूनिवर्सल। तो मन रखना नाटा UNHCR कौन ना यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी मन रखी था। तो राइट अबाउट 1951 कन्वेंशन। द 1951 कन्वेंशन इज ए लिविंग इंस्ट्रूमेंट और ह्यूमन राइट्स ट्रिटी। तो जो मानविक अधिकार जो चुक्ति को तार गोटे लिविंग इंस्ट्रूमेंट। इट इज ए क्वाइट स्टेट सेंट्रिक इन द सेंस दैट इट रिप्रेजेंट्स अंडरटेकिंग्स एंड ऑब्लिगेशंस एक्सेप्टेड बिटवीन पार्टीज टू रेस्पेक्ट प्रोटेक्ट और अकॉर्ड सर्टेन राइट्स एंड बेनिफिट्स। व्हाट राइट टू डू रेफ्यूजीज हैव। तो गोटे रेफ्यूजी कौन कौन अधिकार अच्छी ना रेफ्यूजी लॉ एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ आर क्लोजली इंटरविन्ड। मैंने कौन जो इंटरनेशनल ह्यूमन मानविक अधिकार विश्व मानविक अधिकार आ रेफ्यूजी लॉ टी मेल खाए मैंने मिसे। दे आर इंडाउड विथ राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मैंने कौट मूवमेंट करेंगे। राइट टू लिबर्टी एंड सिक्यूरिटी से स्वतंत्रता और सुरक्षा दिज्व। राइट टू फैमिली से निजर फैमिली को रखिपारे मैंने
ଚଳିପାରିବେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା, ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କାମ ଦିଆଯିବ, and other fundamental freedoms and privileges are enshrined in the international and regional human rights treaties. Okay, what is non-reformated? Non-reformment कौन? The basic principle of refugee law is non-reform. तो गोटे basic principle गोटे, it refers to the obligation of a state not to refund or return a refugee to the forfeiture of territories where his life or freedom would be threatened on account race, religion, nationality, membership or particular social group. तो यह कौन ना से केबे मध्य आउ कौन इट रिफर्स टू ओब्लिगेशन द स्टेट नॉट टू रिफंड और रिटर्न माने किसी रिटर्न करबेनी कहीं से कौन से भय थाए निजर फ्रीडम को नहीं, निज सुरक्षा को नहीं, ऑन द अकाउंट ऑफ रेस हो पारे, रिलीजन कौन धर्म हो पारे, नेशनलिटी हो पारे, मेंबरशिप हो पारे, ओके, आ पार्टिकुलर सोशल ग्रुप हो पारे. व्हाट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑन द ऑफ द रेफ्यूजी. तो गोटे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट कौन रेफ्यूजीर शरणार्थीर. द रेफ्यूजी हैज द राइट टू सिक एसुलम एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एट द रीजनल लेवल. The rights are closely related under the status of 1951 Convention and its ability to claim asylum. What is the right? What is right to liberty and security of refugee? Refugee स्वतंत्रता और सिक्योरिटी कौन थाए? The right to liberty and security of a person is important on the context of how asylum seekers are treated within the intended country of refugee. माने बर्तमान ताहा सहित कौन किपरि ट्रीट करा ताहाकु सेतपई बहुत इंपोर्टेंट. द नेशनल लॉ ऑफ सेवरल कंट्रीज प्रोवाइड द detention of asylum seekers. What is the right to family life of refugee? So according to Article 23, International Convention on Civil and Political Rights, a number of countries provide the granting of derivative status, माने status दिया to depend on the relatives. Okay. What is the enforcement of asylum claiming? So the adjudication of asylum claims is resolved by individual states. The refugee state status is determined by the United Nations High Commissioner for Refugee. तो ताहा asylum claiming कहा जाए. How is the status of refugee determined? All individuals granted refugee status as derivative relatives are issued under United Nations High Commissioner for Refugee. तो जो हमारो UNHCR टी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करे हम देखिले. इट स्टिप्यूट माने कहीं सबुतरे देखे तदार करे कहीं जो आसला स्टाटस कौन. तो ऑल इंडिविजुअल मान प्रत्येक व्यक्ति मान को ग्रांटेड रिफ्यूजी स्टाटस रहिबो. ऑल जो डेरिवेटिव रिलेटिव्स आर इश्यूड अंडर द यूनाइटेड नेशन हाई कमिशनर फॉर रिफ्यूजी. इट stipulate that the holder is a refugee entitled to protection including protection from reformulated. What is asylum? No international document defines asylum. Article 14 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights simply say that everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from protection. Okay. Next देखिबा what is international humanitarian law. तो international humanitarian law कौन ना इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स माने गोटे रूल माने ताको सेट करा जाए सेट ऑफ रूल्स व्हिच सीक टू लिमिट द इफेक्ट्स ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजन. तो जो आमर जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट थाए माने जदि टिके युद्ध हेले जदि एमिति हो जाए किछि आम रूल नाही किछि रेगुलेशन नाही ताले टिके जो आम परमानेंट जो रही आमर ताकू यूज करबा परमाणु शक्ति देश न पूरा पृथ्वी ध्वंस हो तो ताहा कौन करे ना किसी आर्म कंट्रोल को लिमिट कर दिए कॉन्फ्लिक्ट सबको से लिमिट कर दिए. इट प्रोटेक्ट्स पर्सन हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द हॉस्टिलिटीज एंड रिस्ट्रिक्ट द मीन्स एंड मेथड ऑफ वारफेयर. आ से सुरक्षा दिए जो मैंने कि यही युद्ध में माने देख दुटा देश सपोज ए आउ बी दुटा कंट्री अच्छा ए बी युद्ध है पुणी ए बी छाड़ी बाकी सी मन ए बी सी डी ई सब देश 5टी देश अच्छा बोले ए बी दीज मध्य किसी कन्फ्लिक्ट है युद्ध है किंतु ए भितर सी डी ई से कौन कले कहीं जब ए बी युद्ध करेंगे ताल जब से जब परमाणु शक्तिर व्यवहार करें पृथ्वी ध्वंस हो सी डी ई से कौन दोष है. तो ह्यूमैनिटेरियन लॉ करे जो मानक किसी दोष नहीं से किसी इनवल्व ना से सुरक्षा दिए. राइट अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. तो यह किपरि सृष्टि उत्पत्ति देखा. तो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज रूटेड इन द रूल्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड रिलीजन्स.
यूनिवर्सल कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बिगिन इन द 19th सेंचुरी। तो 19 यह आसिला कॉन्सेप्ट राइट अबाउट सम ऑफ एग्रीमेंट टू रिड्यूस वारफेयर। तो किसी एग्रीमेंट जो कौन युद्ध को किसी हटाइबा तो 1972 बायोलॉजिकल कन्वेंशन ये सब हम देखा 3 मार्क्स डिस्कसन कले ये सब गुड़िक आम देखा ब्रीफली एक्सप्लेन करवा। 1933 1993 केमिकल वेपन कन्वेंशन 1980 कन्वेंशनल वेपन्स कन्वेंशन एंड इट्स 5 प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट व्हाट आर द की इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रिटीज एंड कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ आर द 2 मेन सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ चुक्ति आ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ आम किपरि लॉ को बनैबा। ओके सच रूल्स आर बाइंडिंग ऑन बोथ स्टेट्स एंड नॉन स्टेट आर्म्ड ग्रुप्स। ता जो रूल बना जाए उभय स्टेट आ किसी नॉन स्टेट आर्म ग्रुप को ता कोन माने बाइंडिंग कर दिए किसी लिमिट रख दिए। राइट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज फंडामेंटली टू द फॉलोइंग person who are not or are no longer participating in hostilities must be protected. The right of practice to an armed conflict to choose method and means of warfare is not limited. Okay, what is public international law? The international humanitarian law is a part of public international law. माने कौन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गोटे पार्ट होची ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ओके पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज ए broad set of treaties, customary law, principle and norms. This framework traditionally regulated relationship only between states. How does international humanitarian law regulate and its activity? The international humanitarian law regulates its activity during armed conflict by 2 procedures. They are jus ad bellum and jus in bello. Okay. What is armed conflict? The armed conflict armed conflict refers to a situation of a constituted incompatibility that to concern government and territory where the use of armed force between 2 parties माने कौन जो आर्म कंट्रोल माने कौन जो दुटा पार्टी थांती जो आर्म सब जो यूज करन ताहा किछि कंट्रोल करबा ताहा लिमिट करबा। ओके इंटरनेशनल एंड आर्म कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट्स रिफर्स टू ए सिचुएशन वेयर देयर इज ए रिसोर्ट टू आर्म फोर्स बिटवीन 2 or more states. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट माने इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट टाइप कौन कौन रही जेपरि कि इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आईएससी अकरिंग बिटवीन 2 कैटेगरी अच्छी तो यहाँ 2 भाग भाग कराई जेपरि कि इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बा आईएस अकरिंग बिटवीन 2 or more states एंड नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बा एनआईएसी गोटेला इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट which orchestrated and non-governmental armed groups or only between armed group। तो है कुछ 2 भाग रही मन रखी था आईएससी एनआईसी। द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस बा आईसीआरसी कौन द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इज द गार्डियन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ तार गार्डियन मैंने आम प्रत्येक आम घर मध्य आम गार्डियन था जे आमको रास्ता देखा ओके हेल्प करती। ठीक से आईसीआरसी हूँ गार्डियन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। It has never recognized the existence of any global war on terrorism, does not consider non-state actors preceded by Al-Qaeda and ISI and their affiliated groups। तो कौन it has never organized the existence of any global war कहीं गोटे किसी युद्ध ना है ग्लोबल रे। ओके नेक्स्ट आम देखा व्हाट इज इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कौन ना देयर इज ए जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट द यूज ऑफ फोर्स बिटवीन स्टेट्स विच रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। इट इज जनरली presumed that any use of such military force is governed by international humanitarian law is attributed to deliberate violation। तो हम बुझले कौन देयर इज जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट द यूज ऑफ फोर्स बिटवीन स्टेट्स मान जो स्टेट था जो फोर्स था शक्ति है ताको यूज करनी विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। it is generally presumed that any use of such military force माने जो प्रतिशत कौन गोटे सैनिक जो फोर्स थाए इज गवर्नड बाय इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज एट्रिब्यूटेबल टू डेलिबरेट द बेलिग्रेंट। व्हाट इज नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कौन नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इज सिग्निफिकेंटली हायर टू अलो द फैक्ट दैट ड्यूरिंग पीस टाइम लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज मान जो शांति समय लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज में
necessitate the use of force against individual or groups, it appropriately governed by domestic criminal as well as human rights law. नेक्स्ट देखा व्हाट इज द लेग स्पेशल्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ इज permissible under the leg specials of international human rights law. The Latin term leg specials derogate legis generally. This means more specific rules will prevail over more general rules. Next देखिए involvement of children in armed conflict. माने लोक पिला मान को involvement था. Example देखिए examine. It is another issue concerning with the international community. 2000 optional protocols establish a number of obligation for the state parties in this regard. Both international law and international humanitarian law should special protection for it. उभय आमर जो international humanitarian law आउ international non international humanitarian law should special protection for it. ये जो involvement of children in armed conflict रे तो ये यूनिट 4 नोट्स टी जो मैंने कि डाउनलोड करना चाहते डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे दीजिए आपण मैंने जाकि नोट्स टी डाउनलोड कर पारे. थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो.